Okay. So good afternoon, everybody. I welcome you all in today's program. This program is being organized under the flagship of Gati program, that is Gender Advancement for Transforming Institution. This program was started by DST, Department of Science and Technology, and CDRI is one of the nodal labs. And today we are going to talk about certain issues which we keep hush-hush at workplace and also which we keep hush-hush in our family. So to break the taboo, we are going to talk about or open the dialogue on menopause and andropause. And as you would be aware, many of us and even our family members or many of our colleagues would have been going through this journey of menopause or andropause, and many of them or few of them would be silently suffering as well. And to initiate this dialogue so that we can understand more about its management, both in personal and professional lives, we have two renowned clinicians today with us. We have Professor Rekha Sachin and Professor Susheel Gupta, who have been kind enough to accept our invitation and despite their busy schedule, could drive all the way and come to CDRI to interact with you in person. So without further ado, I would start the program first by introducing Professor Rekha Sachin. She is professor and unit head of obstetrics and gynecology department at KGMU. She's also in charge of critical care unit. And she takes care of the sexually transmitted infections and family planning unit. And her area of research is gynecological malignancies, kidney injuries during pregnancy. She has authored many books and her work has received a lot of recognition. And over to Professor Rekha Sachin. Thank you so much, Dr. Neeti and Dr. Monica, for calling me here. And this is a very important topic, why we talk about this at workplace. Hello. Slide किधर से ऑपरेट करेंगे? So, why we collected here, why we want to discuss this topic, why it is important. आप जहाँ पे भी वर्क प्लेस पे वर्क करते हैं वहाँ पे हम दो जेंडर होते हैं, एक मेल एंड फीमेल जेंडर. अक्सर होता है कि हम मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, ये तो हम एक्सेप्ट करते हैं, शायद आज भी anyway we are dominating, but we should accept the truth. सच को हमें समझना है. हम किसी भी सोसाइटी को बिलोंग करते हो, मेल और फीमेल, बट हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ हमें हिंडर नहीं करती है. आपके प्रोग्रेस में कोई चीज़ ऐसी ऑब्स्टेकल नहीं करती. हाँ, थोड़ा सा चेंजमेंट आते हैं तो आप थोड़ा सा मेंटली हल्का सा पजल्ड होते हो, हल्का सा आप फिजिकली थोड़ा डिस्टर्ब होते हो थोड़े समय के लिए. बट जैसे होता ना, किसी को शुरू में मान लो डायबिटीज़ हुई तो क्या होता है, आपको थोड़े समय प्रॉब्लम करती है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, बॉडी आपकी एक्लिमेटाइज हो जाती है उस चीज़ के लिए. तो आपको वही डायबिटीज़ जो शुरू में प्रॉब्लम कर रही थी बाद में प्रॉब्लम इतनी नहीं करती है. तो मेनोपॉज इज सेम, कि आपको इनिशियली थोड़े हार्मोनल चेंजेस होंगे, हार्मोन बैलेंस डिस्टर्ब होगा तो आपको प्रॉब्लम होगा, बट बाद में आपको वो प्रॉब्लम्स नहीं होंगी क्योंकि आपकी बॉडी उसके लिए एक्लिमेटाइज हो गई. तो ये कहना कि मेनोपॉज है या ओल्ड एज है या आपकी एज इतनी हो रही है अब आप इस लायक नहीं हैं, तो ये मेरे ख्याल से ये चीज़ें सही नहीं हैं. शायद उसी को हम लोग यहाँ समझने आए हैं कि आखिर क्यों हम कहते हैं कि नहीं ये लेडी ओल्ड हो गई, इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है. ये स्लाइड्स जो है आप देखिए क्या टैबू हैं मेनोपॉज के साथ. व्हाट आर द टैबू? आप कहते हैं लॉस्ट योर माइंड, अरे नहीं अब इनको समझ में तो आता नहीं है, तो ओल्ड एज हो गई हैं ना. लॉस्ट योर स्ट्रेंथ,
आपकी पावर नहीं रह गई, जो आप पहले काम करते थे वो आपकी क्षमता खत्म हो गई है। और लॉस योर लुब्रिकेशन स्पेशली फॉर द मेल पार्टनर, नहीं, लॉस योर सेक्स ड्राइव, ये सारे सिचुएशंस क्रिएट होते हैं। और लास्ट में अरे आप तो कुछ कर नहीं पाती, आप जॉब छोड़ दीजिए, आप इस लायक तो है नहीं कि इस पद तक आप इस पोस्ट का काम संभाल सकें, क्योंकि जो जो आपकी पोस्ट बढ़ती है तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, और उस समय आपकी बॉडी एक्लेमेटाइज हो रही होती है, तो उस समय आपको प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी, तो सुनने को मिलता है। बट ये सच नहीं है, ठीक है, फॉर द शॉर्ट टाइम, मुश्किल से मेरे ख्याल से 6 मंथ to 1 year टाइम लगता है आपको एक से दूसरे पे स्विच ओवर करने में और थोड़ा सा बॉडी को एक्लेमेटाइज करने में। आप देखिए, लोग कहेंगे आप काम नहीं कर पाती, आपको हमेशा गुस्सा ही आता रहता है, और हमारी फीमेल की आदत होती है, हम लोग बोलते बहुत हैं। जो प्रॉब्लम मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस है कि हम अपनी बातें एक्सप्रेस बहुत करते हैं, जरा सी कोई समस्या हुई हम बता देते हैं, हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, भाई ये मत करना। मेल में क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है बट स्टिल नहीं बताते। अभी डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि एंड्रोपॉज क्या है, क्यों वो लोग नहीं बोलते हैं। ऐसा नहीं, अब हम लोग उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहाँ मेल की भी प्रॉब्लम हमें पता होती है, बट वो हम कोई बोलता नहीं है। फीमेल हर समय गाना गाते हैं, तो उससे सब बातें सब जगह स्प्रेड होती हैं और रॉन्ग वे में स्प्रेड होती हैं। आपको जब देखिए गर्मी लगती रहती है, जब देखो कमर दर्द होता रहता है, घर में जब फीमेल अपनी प्रॉब्लम कहती है तो हस्बैंड की यही वर्ड्स होते हैं। वर्क प्लेस में तो होते ही होते हैं, घर में भी यही होते हैं, अरे तुम्हें तो यही होता रहता है ना। बट ये शॉर्ट टाइम के लिए सारे चेंजेस होते हैं। और अब तो हम लोग मेनोपॉज की ये इंपॉर्टेंस होगी कि वर्ल्ड मेनोपॉज डे बना करके अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं, क्योंकि अवेयर होना किसी भी प्रॉब्लम का सबसे बड़ा सोल्यूशन होता है, अवेयरनेस। अगर हमें पता ही नहीं है कि व्हाट इज़ दिस, तो आपको जरा सा हॉट फ्लैशेस होंगे, आप परेशान हो जाएंगे, इस डॉक्टर उस डॉक्टर, 4 डॉक्टर से आप कंसल्ट करेंगे, आप परेशान होंगे। जब आपको पता है कि नहीं ये हॉट फ्लैशेस नॉर्मल फिनोमेना है, ये तो होनी है, थोड़ा ईस्ट्रोजन हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है, अभी थोड़े दिन में चीज़ें सेटल हो जाएंगी, तो आप नहीं दौड़ेंगे डॉक्टर के पास। हमें अगर पहले से पता है कि प्रेगनेंसी में क्यों लोग इतना परेशान नहीं होते, लोगों को पता है फिजियोलॉजिकल है। मेनोपॉज में लोगों को ये पता ही नहीं कि फिजियोलॉजिकल है, ये फिजियोलॉजिकल फिनोमेना, दिस इज नॉट पैथोलॉजिकल फिनोमेना। सबसे पहले तो हमें यही डिफ्रेंशिएट करना है कि दिस इज फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। दिस इज फिजियोलॉजिकल फिनोमेना, शॉर्ट वाइल चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस को एडजस्ट करने में बॉडी को थोड़ा टाइम लगता है और उसी में हमें दिक्कतें होती हैं। इट इज नॉट वर्किंग, इट इज नॉट वर्किंग, इसके आगे स्लाइड कर दीजिएगा। Okay. What is menopause? It is a permanent cessation of menstruation at the end of reproductive life due to why? Due to loss of ovarian function, ovarian follicular activity. That means there is decrease in secretion of estrogen hormone. It is from the Greek word that is mens means monthly and pause means cessation. Monthly cessation, menstruation का cease होना. It is defined retrospectively as the time of final menstrual period followed by 12 months. Means after last menses, if it is 12 months past, then it is known as menopause. Sometimes it is premature, sometimes it is in time. In cases where it is before 40 years of age, if cessation before 40 years of age, that means this is a premature menopause. Sometimes because of ovarian insufficiency, sometimes because of surgery. If ovary removed by any means, because of any problems, or there is radiotherapy, or there is chemotherapy, radiotherapy, removal of ovary, then there may be a surgical menopause. Or sometimes as such body started in this phase, that is premature menopause, and most probably because of ovarian insufficiency. What are the clinical criteria for that? No period for more than 12 months. Presence of menopausal symptoms. What are the symptoms? That is vasomotor symptoms, that is hot flashes, genitourinary symptoms, sexual dysfunctions, and osteoporosis. These all with the menopause. In some women this is much more in intensity, in some women this is in less intensity.
एक्चुअली जो महिलाएं बहुत काम करती रहती है, मतलब अपने फील्ड में जो भी फील्ड उनका है, अगर उसमें वो इंगेज होते हैं और ज़्यादा वर्क करते रहते हैं तो उनको शायद मेनोपॉजल सिम्टम्स इतना उन पर इफेक्ट नहीं डाल पाते। जो एक तरह से कहते हैं ना कि चेयर, सिटिंग चेयर और वर्क प्लेस से थोड़ा हट कर आप रहते हो तो आपको ज़्यादा महसूस होता है। आप वर्क प्लेस पे होते हो तो आपको इतना पता नहीं चलता कि देयर इज एनी मेजर चेंज। व्हाट आर द बायोकेमिकल क्राइटेरिया? इफ एफएसएच इज मोर देन 35, आप इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, आपको श्योर होना है कि है मेनोपॉज, इस वजह से मेंसेस स्टॉप हो गए या समथिंग रॉन्ग। देन एफएसएच मोर देन 35 मिली इंटेंसिटी पर ml और ईस्ट्रोजन लेस देन 20 नैनोग्राम पर ml। देन you can say this is because of menopause. These cessation of menstruation, or these are the problems because of that menopause. Every woman goes through the menopause. This is sure sort. कोई इससे बचता नहीं है, सभी को मेनोपॉज फेज से गुजरना है, तो ये कोई एबनॉर्मल फिनोमेना नहीं है। इफ आई एम फीमेल देन आई विल गो थ्रू दिस मेनोपॉज। इट यूजुअली अकर्स बिटवीन 45 to 55 ईयर ऑफ एज। क्यों? ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन ड्रॉप्स डाउन, अराउंड 40 ईयर एज से स्टार्ट हो जाता है ड्रॉप होना, और 51 तक जाकर के काफ़ी ड्रॉप कर जाता है, इसीलिए मेनोपॉज स्टार्ट। इसीलिए जो चेंजेस होते हैं ना वो 40 ईयर के बाद शुरू हो जाते हैं, धीमे धीमे प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती है और वहीं से बॉडी में चेंजेस शुरू होते हैं। सिम्टम्स जो मेनोपॉज के स्टार्ट होते हैं यूजुअली आप देखिए कितना 4 to 8 ईयर टाइम लेते हैं एटलीस्ट। जो हमारे हॉट फ्लैशेस हैं, वीकनेस, थोड़ा टायर्डनेस जो शुरू होती है, गुस्सा आना शुरू होता है, 40 ईयर के अराउंड आप देखिए आपके टेम्परामेंट में चेंज आना शुरू होता है, और 8 सालों में धीरे धीरे बॉडी एक्लिमेटाइज हो जाती है और आप फिर बड़े शांत बन जाते हैं। तो लोग कहते हैं ना घर के बुजुर्ग बड़े शांत हो गए, ये तो बड़े एरोगेंट थे, तो वो बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस। ऑटोमेटिक बॉडी में चेंजेस होते हैं कि आपके नेचर में बदलाव होता है। लोग फिर कहते हैं ये तो बड़ी अच्छी हो गई, अरे बड़े अच्छे क्या हो गए, अपने आप बॉडी हमारी सही हो गई, हम अच्छे हो गए। तो दिस इज द रीजन कि हम सोचते हैं कुछ और। तो कितने स्टेज में बांटा गया? प्री मेनोपॉज, पेरी मेनोपॉज एंड मेनोपॉज। प्री मेनोपॉज मीन्स रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, जो हमारी हेल्दी सबसे अच्छी लाइफ मेरे ख्याल से यही होती है, जिसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। इसमें आप कुछ भी करने का मादा रखते हो, आप कुछ भी टास्क ले लेते हो, नहीं आई विल डू, तो ये आपकी होती है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। इसमें आपको बहुत कम प्रॉब्लम होती है और पीरियड आपके रेगुलर होते हैं, दैट इज नियर अबाउट 35 to 45 ईयर के इन बिटवीन। इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा पेरीमेनोपॉज फेज। पेरीमेनोपॉज फेज में क्या होता है? पीरियड धीरे धीरे इरेगुलर। शुरू में क्या होगा? मंथ में 1.5 महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, पहले डे बढ़ेंगे, फिर इसके बाद मात्रा घटना शुरू होगी, पहले 3 पैड फिर 1 पैड, तो धीरे धीरे मेंस्ट्रुएशन में पीरियड साइकिल्स प्रोलॉन्ग होती जाएंगी और मात्रा घटती जाएगी। इस समय थोड़े थोड़े आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। हॉट फ्लैशेस सबसे पहले शुरू होता है, हॉट फ्लैशेस एंड लॉस ऑफ लिबिडो। यही आप देखिए ना, फैमिली में जितने भी डाइवोर्स हो या कोई क्योस हो, सारे यहीं शुरू होते हैं नियर अबाउट 40 तक तो सब बड़ा बढ़िया चलता है, 45 से शुरू होती है कहानी, क्योंकि लॉस ऑफ लिबिडो इन हॉट फ्लैशेस। वुमेन हर समय कंप्लेन, मुझे ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, तो हम लोग बोलते बहुत हैं, वही मैंने कहा ना कि बोलना थोड़ा हमें कम करना चाहिए, तो हमारी आधी चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आएंगी। तो हॉट फ्लैशेस एंड लॉस ऑफ लिबिडो, ये हमारा जो पेरीमेनोपॉज फेज है, सारी प्रॉब्लम यहाँ शुरू होती है, क्योंकि जब मेनोपॉज में हम आते हैं तब तक तो हमारी एक्लेमेटाइज हो जाती है बॉडी, हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। देन हम आते हैं मेनोपॉज फेज। मेनोपॉज फेज में ब्रेस्ट कैंसर का थोड़ा खतरा बढ़ जाता है और डिप्रेशन शुरू हो जाता है हल्का सा, बट इतना नहीं होता है अगर आप अपने को, क्योंकि अभी हम बताएंगे कि कहाँ पर आके हम गलत हैं जिससे हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं और हमें क्या करना चाहिए कि ये सब प्रॉब्लम्स जो दिखाई देती हैं और होती हैं वो सब नलीफाइड हो जाएं। इन विजाइनल चेंजेस शुरू हो जाते हैं यहाँ से, तो विजाइनल इरिटेशन, इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये सारे स्टार्ट हो जाते हैं। एंड देन पोस्ट मेनोपॉज फेज आपका। पोस्ट मेनोपॉज फेज में थोड़ा सा पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा, हम कहते हैं ना, अब भाई गिरना नहीं, अगर नहीं बोन्स जुड़ेंगे नहीं आपकी, तो यहाँ पे खतरा ऑस्टियोपोरोसिस का शुरू हो जाता है और हार्ट डिजीज का। तो ये हमारी स्टेज आती है 51 के बाद, जहाँ पर हमें थोड़ा सा सच में सावधान रहने की जरूरत है कि हम बाथरूम हमारे स्लिपरी ना हो, या जहाँ पे हम कहते हैं ना कॉशन साइन लगा दीजिए जहाँ पोछा लगा रहे हैं आप, नहीं थोड़ा सा गिरे और पता चला फ्रैक्चर हो गया।
तो यहाँ से ये दूसरी समस्याएं हमारी स्टार्ट हो जाती हैं। ये थोड़ा सा इन्होंने क्लासीफाई किया है, ये स्ट्रॉक क्राइटेरिया है, थोड़ा थ्योरेटिकल है कि इसमें मेन चीज़ ये बताना था मुझे। पेरीमेनोपॉज फेज में आप देखिए साइकिल की लेंथ में चेंजेस हो रहे हैं। ये पेरीमेनोपॉज फेज में देखिए वेरिएबल साइकिल लेंथ मोर देन 7 डेज साइकिल हो गई। नॉर्मली क्या है 3 to 5 डेज मैक्सिमम। और यहाँ पर थोड़े दिन बाद क्या होगा, यहाँ एफएसएच बढ़ रहा है। एफएसएच तो बढ़ना आपका यहाँ से शुरू हो गया, बट यहाँ पीक पे पहुँचता है तो यहाँ पे साइकिल्स स्किप होने लगी। मोर देन 2 स्किप साइकिल, 2 महीने में 3 महीने में पीरियड आना शुरू हो गया पेशेंट को या वुमेन को। और यहाँ पोस्ट मेनोपॉज फेज में सबसे ज़्यादा एफएसएच राइज किया, तो यहाँ से चेंजेस आपके प्रोमिनेंट हो जाते हैं। एंड्रोक्राइनोलॉजी क्या है इसके पीछे, एफएसएच 10 to 20 फोल्ड राइज करता है एंड एलएच 3 फोल्ड राइज करता है। लुटिनाइजिंग हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन में तेजी से राइज होता है। और ईस्ट्रोजन लुक्स लाइक फीमेल, सबसे मेन हार्मोन क्या है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन में जब चेंजेस शुरू होते हैं तो वहीं से जो है हमारी बॉडी में चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि फीमेल हार्मोन असली है हमारा ईस्ट्रोजन। देन डिक्रीज इन ईस्ट्रोजन स्टार्ट हुआ और डिक्रीज रेशियो ऑफ ईस्ट्रोजन टू एंड्रोजन, और एंड्रोजन की मात्रा बढ़ना शुरू हो गई। एंड्रोजन क्या बॉडी में एडिपोसिटी करेगा, तो जो फैट डिपोजिशन शुरू हो जाता है, आप कहते हैं अब हम मोटे होने लगे, फैट डिपॉजिट होने लगा, तो शोल्डर्स पे, टमी पे फैट, बटक पे फैट, ये डिपोजिशन बिकॉज ऑफ एंड्रोजन्स। तो आप सोचते हो कि नहीं, हाँ एक्सरसाइज अगर रेगुलरली कोई कर रहा है तो उस तरह नहीं डिपॉजिट होगा, बट स्टिल कुछ ना कुछ तो डिपॉजिट होगा वो, क्योंकि बिकॉज ऑफ राइज इन एंड्रोजन्स। तो आप बहुत सारी चीज़ें रोक नहीं सकते हो, आप ड्रेस अपनी चेंज कर सकते हो, तो उससे आप लुक्स लाइक स्मार्ट। ये जरूरी नहीं कि हम बॉडी को ही पूरा चेंज करें, बॉडी जितनी हो जाए फिर हम अपने आप को चेंज कर लें। इंक्रीज पेरिफेरल एरोमेटाइजेशन, इसी वजह से थोड़ा सा एडिपोसिटी शुरू हो जाती है। देन व्हाट इज हेल्थ कंसर्न, क्यों हम मीनोपॉज को डिस्कस कर रहे हैं, क्या हेल्थ कंसर्न है, मीनोपॉज के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं। आप देखिए सबसे पहले चेंजेस इन मूड, सबसे पहले इरिटेबिलिटी, गुस्सा बहुत आने लगता है। देन लॉस ऑफ इलास्टिसिटी एंड थिनिंग ऑफ स्किन, स्किन में इचिंग होना, थोड़ी सी आप हैवी, पहले आप हैवी सिल्क पहनते हो, जब एक एज होता है 30-40, 50 आती है तो आप लाइट सिल्क ढूंढते हो या लाइट कॉटन ढूंढते हो ना, साड़ियाँ चेंज हो जाती हैं सारी, क्योंकि स्किन में वो वही साड़ी फिर चुभने लगती है। तो ये नॉर्मल फिनोमिना, इलास्टिसिटी घट रही है और थिनिंग हो रही है। लॉस ऑफ फर्मनेस ऑफ ब्रेस्ट, देन एमोनोरिया, इन इंक्रीज रिस्क ऑफ वेजाइनल इन्फेक्शन। प्रॉब्लम जो करता है थोड़ा सा ये वाला पोर्शन करता है कि वेजाइनल इन्फेक्शन हुए और आपको डॉक्टर्स के पास विजिट करना पड़ा। बाकी में तो आप अपने आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है। रिस्क ऑफ हार्ट डैमेज या हार्ट की प्रॉब्लम्स, ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाती है बोन्स में, इसको भी रोका जा सकता है, ये भी प्रिवेंटेबल है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंसी एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जब ये प्रॉब्लम शुरू होती है तो यहाँ पे काफ़ी हार्मोन का रोल शुरू हो जाता है, यहाँ पे हमें हार्मोन ट्रीटमेंट देना पड़ता है। यहाँ तक तो सारे हम चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं, सिर्फ अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफाई कर कर। सिम्टम्स में प्रोमिनेंट सिम्टम्स जो स्टार्ट होता है दैट इज हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट इन इंसोम्निया। पहले इतनी नींद आती है, फिर कहते हैं ओल्ड एज में नींद नहीं आती है, एज के साथ साथ आपकी नींद घटती जाती है, आपको उतना सोने का मन नहीं करता है। सेक्सुअल डिसफंक्शन में विजाइनल ड्राइनेस, डिस्पैरियूनिया, डिक्रीज लिबिडो, डिक्रीज सेक्सुअल अराउजल, ये थोड़ा सा यहीं से फैमिली में चेंजेस आते हैं, फैमिली डिस्टर्बेंसेस जो शुरू होते हैं बिकॉज ऑफ दिस डिस्टर्बेंस, यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। देन जेनाइटो यूरिनरी सिंड्रोम में डिसयूरिया, यूरिनरी अर्जेंसी, रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वल्वोविजाइनल एट्रोफी, ये बेसिकली बिकॉज ऑफ लेस ईस्ट्रोजन अमाउंट एंड देयर इज थिनिंग ऑफ द एवरी एपिथेलियम, जहाँ भी है तो विजाइनल एपिथेलियम में भी थिनिंग होगा, दैट्स वाई देयर इज डिसयूरिया एंड अर्जेंसी एंड स्टार्ट ऑफ यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। साइकोलॉजिकल में डिप्रेस मूड, इसीलिए वो कहते हैं ना कि नहीं आप दोस्तों के साथ बैठो, फिर से दोबारा बचपन शुरू। एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग, लेथार्जी, डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेशन, ये थोड़ा थ्योरेटिकल है। इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर, कार्डियोवास्कुलर में इंक्रीज रिस्क ऑफ एमआई, एज के साथ साथ आप कहते हैं ना
होल बॉडी चेकअप कराना चाहिए। इसीलिए कॉन्सेप्ट आया ना कि हेल्थ चेकअप कैंप। आप अपनी, मेरे ख्याल से सभी इंस्टीट्यूशन में हेल्थ चेकअप कैंप एक बार तो कम साल में होता ही है। यहाँ पे पता नहीं, मुझे नहीं मालूम है, बट अभी रिसेंटली KGMU ने भी शुरू कर दिया कि सारी फैकल्टी का हेल्थ चेकअप, एनुअल हेल्थ चेकअप होगा ही होगा। इन्हीं सब कारणों से, क्योंकि साइलेंट MI हो के साइलेंट डेथ इस समय 40 ईयर में आप देख रहे हैं कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए, देन वी शुड बी अवेयर। इंक्रीज रिस्क ऑफ स्ट्रोक, इंक्रीज रिस्क ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये तो खैर अभी मैंने कभी नहीं देखा, बट रिस्क ऑफ स्ट्रोक तो काफ़ी देखने को मिलता है। डिमेंशिया, एल्जाइमर्स, ये थोड़े से चेंजेस, लेकिन ये लेट आते हैं, इतनी जल्दी नहीं होते हैं, लेट स्टेज है। सबसे स्टार्ट जो हमारा होता है हॉट फ्लैशेस से, प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है, हॉट फ्लैशेस। व्हाट इज दिस? सडन ऑनसेट ऑफ रेडनिंग ऑफ स्किन over the head, neck and chest, accompanied by an increase in heart rate and feeling of intense body heat. पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब बस हमें अचानक से कुछ होता है और बहुत घबराहट होती है, थोड़ी देर एकदम सब पूरा चेहरा रेड हो जाता है हमारा, और इसके बाद थोड़ी देर में सब चीज़ें शांत हो जाती हैं। दैट इज़ हॉट फ्लैशेस। पहचानने की ज़रूरत है, और वो फिर डॉक्टर के पास जाता है कि हमें कोई मेजर प्रॉब्लम हो गई, कार्डियक प्रॉब्लम हो गई, ऐसा नहीं होता है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि सिर्फ ये रेडनिंग जो थोड़े समय के लिए होती है, ये रेडनिंग जो है एज के साथ अगर हो रही है, दैट मीन्स ये हॉट फ्लैशेस है। द फ्लैश इज समटाइम्स कंक्लूडेड बाय प्रोफ्यूज पर्सपायरेशन, ड्यूरेशन फ्यू सेकेंड टू सेवरल मिनट्स, और कभी कभी लेट नहीं मैनेज किया तो आवर तक कन्वर्ट हो सकता है। तो ये थोड़ा सा पेशेंट को बहुत, मतलब किसी भी महिला को डिस्टर्ब करते हैं। बट ये है कि आप अगर एक्सरसाइज और योगा सब कुछ करते हैं तो शायद काफ़ी कुछ मैनेज हो जाते हैं। मोस्ट कॉमन कंप्लेंट जो है वो यही सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है महिलाओं में। सिम्टम लास्ट फॉर 1 to 2 ईयर। देखो मैं क्या 2-3 साल में चीज़ें अपने आप एक्लेमेटाइज होती जाती हैं, और कभी कभी 10 ईयर का टाइम लगता है, लेकिन अक्सर मैंने देखा 2 ईयर बाद वो सब चीज़ें सेटल होने लगती हैं। इंटरवेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है एज के साथ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। ये कहना कि हम ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेनोपॉज हो गया है या हमारी एज इतनी हो रही है, ये कोई उसका आंसर नहीं है। उसका आंसर सिर्फ ये है कि हम अपनी लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करें। और धीरे धीरे क्या होता है एज के साथ साथ ना, आपकी जॉब इतनी अच्छी है, आपकी सैलरी इतनी अच्छी होती है, तो हम लोग वर्क प्लेस पे क्या होता है धीरे धीरे हम लोग आलसी हो जाते हैं ना। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग थोड़ा सा आलसी हो जाते हैं। कौन निकले, कौन वॉक करे, कौन एक्सरसाइज करे, और हमेशा बहाना क्या होगा, हमारे पास टाइम ही नहीं होता, इतना तो काम करते हैं, टाइम ही नहीं मिलता कि हम एक्सरसाइज करें। हम सब कुछ करते हैं, अपने लिए 1 घंटा नहीं देते हैं, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी अपनी लाइफ के लिए। 1 आवर इज़ इनफ। उतने के लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है अपनी लाइफ को मॉडिफाई करके, अगर कोई हैबिट्स ऐसी हैं तो आप छोड़ दीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट डाइट, डाइट में भी सबसे इम्पॉर्टेंट क्या, फ्रूट की मात्रा। आपको इस समय माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत है, तो इस समय आपकी जो डाइट होनी चाहिए, फ्रूट्स की मात्रा बहुत होनी चाहिए। और हमारी क्या आदत है, हम 2 रोटी अगर लाए तो 2 रोटी सब्जी रख लाए, दाल रख लाए ना, बहुत हुआ तो दाल रख लिया, वरना कुछ नहीं रखा। तो ये जो बैलेंस डाइट है ना, जिसमें फ्रूट, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, ये समय ऐड ऑन करने हैं, और सारे हमें फैट्स को छोड़ना है, ये थोड़ा सा टेस्ट को बिगाड़ता है, लेकिन इस पर हमें कॉन्सेंट्रेट करना है, तो हमें लगता है मेनोपॉज सिम्टम्स आपको पता ही नहीं चलेंगे। देन ऑस्टियोपोरोसिस के लिए विटामिन डी सप्लीमेंटेशन एंड कैल्शियम सप्लीमेंटेशन। अगर हम कैल्शियम एंड विटामिन डी प्रॉपरली लेते हैं तो आपको बोन की प्रॉब्लम नहीं होती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज, योगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ये जरूरी नहीं कि हमें डायबिटीज़ हो तभी हम योगा एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि डायबिटीज़ भी इसी एज में जाके आपको, टाइप 2 डायबिटीज़ का यही एज है ज़्यादा आपको जो सफ़र करना पड़ता है। तो आप योगा और एक्सरसाइज तो हर एक के लिए इम्पॉर्टेंट है। देन अब हम आते हैं कि हमें खाने पीने में इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। ये देखिए, आइसोफ्लेवोन सप्लीमेंटेशन, सोया प्रोडक्ट, जो भी रोटियां बन रही हैं उसमें हमें सोयाबीन मिला देना है। इतनी छोटी सी बात होती है, लेकिन हम वही आटा, वही मैदा हमारे घर चलता रहता है, तो छोटे से मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है कि हम आइसोफ्लेवोन सप्लीमेंटेशन उसमें कर दें, सोया प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ा दें, और सोयाबीन के कुछ नहीं, रोटियों में आटा ही मिला दिया। हार्मोन थेरेपी तो तब देना है जब सच में बहुत सिम्टम्स हैं, पेशेंट की लाइफ बहुत ही डिस्टर्ब है और हार्मोन बैलेंस नहीं हो रहे हैं और बहुत सिम्टोमेटिक है, देन हार्मोन रिप्लेसमेंट, क्योंकि हर दवा का अपना साइड इफेक्ट होता है। अगर हम हार्मोन रिप्लेसमेंट देते हैं तो उससे क्या है, आपके ब्रेस्ट कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, ओवेरियन कैंसर के खतरे बढ़ जाते हैं। तो अब बहुत ही डिस्टर्बिंग है, तो आपको फ़ायदा और नुकसान दोनों के बीच में देखना होता है, तो फिर आपको देना है। अदरवाइज आपका सिर्फ मैक्सिमम, मुझे तो लगता है मैंने अभी तक
मेरी थीसिस जो है वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पर है, बट शायद ही मैंने किसी को हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी होगी, 22 सालों में 22 पेशेंट को भी दी नहीं होगी, ठीक है, जबकि मेरी उसी पे थीसिस है, पूरा रिसर्च उसी पे है। लेकिन सब चीज़ों के साइड इफेक्ट आपको पता होते हैं तो आप थोड़ा सोचते हैं कि जहाँ सच में ज़रूरत है वहाँ आप देते हैं। अदरवाइज मेरा सबसे पहला कॉलम होता है लिखने का ऊपर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, ये मेरे प्रिस्क्रिप्शन में ही मैंने लिखना शुरू कर दिया, अब बताने की जरूरत नहीं है, बोलती भी हूँ प्रिस्क्रिप्शन में भी लिखती हूँ। एंट्री करते हैं पेशेंट और वहीं से मेरी स्टार्ट होती है, ऊपर से नीचे तक उनको देख कर शुरू होते हैं कि आपको क्या करना है। तो ये हर प्रिस्क्रिप्शन में इंक्लूड है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, योगा एंड एक्सरसाइज, क्योंकि चाहे आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हो, चाहे आपको मेनोपॉजल डिजीज, जितने भी हार्मोनल चेंजेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उन सब में इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है। और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे पहले डाइट आती है, डाइट के बाद आपका दूसरा आता है कि आप अपने आप को कैसे, अपने मूड को, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स ना आपके ब्रेन से रिलेटेड हैं, आप हर समय स्ट्रेस में हैं तो हार्मोन्स के लेवल्स भी अलग अलग होंगे। स्ट्रेस को रिलीव करना है, आप स्ट्रेस कैसे दूर करते हैं ये आपकी मर्जी, गाना सुनकर दूर करना चाहते हैं, आप खेल कर दूर करना है, मतलब आपके जो हॉबी हैं आप उसको अपनाइए। तो स्ट्रेस को पहले दूर करें सबसे पहला, क्योंकि स्ट्रेस दूर नहीं होगा तो हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस, ये एक दूसरे से सब कनेक्टेड हैं। अगर यहाँ पर हमारा स्ट्रेस है तो सभी जगह वो चेंज लाएगा। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में आपकी डाइट और आपका स्ट्रेस दो लेवल आपको संभालने हैं। इसके बाद तीसरा लेवल आता है कि हम सब योगा एंड एक्सरसाइज। देन हमारा आता है कि हम आइसोफ्लेवोन सप्लीमेंटेशन, इससे आगे मुझे बढ़ना ही नहीं पड़ा आज तक, तो मैंने बहुत कम पेशेंट को हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी है। हाँ, अगर सच में दिक्कत है तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आपको देनी है, दोनों चॉइस आपके पास है। अगर यूट्रस निकल गया है तो सिर्फ ईस्ट्रोजन सप्लीमेंटेशन है, अगर यूट्रस है तो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों आपको देना पड़ेगा, क्योंकि विड्रॉल ब्लीडिंग होगी तो प्रोजेस्टेरोन आपको देना कंपलसरी हो जाएगा। और जब हम अकेले ईस्ट्रोजन देते हैं, अगर यूट्रस निकल गया तो खैर ऐसा एंडोमेट्रियल कैंसर का तो डर है नहीं, तो हम ईस्ट्रोजन अकेले भी दे सकते हैं, अदरवाइज हम ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों को सप्लीमेंट करते हैं। इससे फ्रिक्वेंसी अच्छी, मतलब रिलीफ बहुत पेशेंट को मिलता है, 75 to 78% ये इफेक्टिव है। बट यूजुअली यहाँ तक हमें जाना नहीं पड़ा, अभी तक हमने देखा कि अगर उतना पेशेंट ढंग से मैनेज करता है तो उसका सब कुछ सही हो जाता है। देन ये ऑनसेट जेनेटोजेनियस सिम्टम्स सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं पेशेंट को, जितना मैंने वुमेन में देखा, क्योंकि एस्ट्रोजन की वजह से ये थिनिंग ऑफ म्यूकोसा, एंड देन देयर इज इन्फेक्शन एंड ड्राइनेस, सबसे ज़्यादा ड्राइनेस परेशान करती है। ड्राइनेस, देन उसी से होगा प्रोटाइटिस और उसी से डिस्पेरिनिया, डिसयूरिया, ये थोड़ा जो सेक्स लाइफ को बहुत इफेक्ट करते हैं, सेक्सुअल लाइफ बहुत डिस्टर्ब इससे होती है थोड़े समय के लिए, फिर धीरे धीरे सब चीज़ें अपने आप नॉर्मल आ जाती हैं। इनके ट्रीटमेंट के लिए आप एस्ट्रोजन क्रीम आते हैं मार्केट में, आप एस्ट्रोजन क्रीम यूज़ करिए, या लुब्रिकेंट्स भी आते हैं, दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। एस्ट्रोजन क्रीम्स हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, या फिर मॉइस्चराइजर, लुब्रिकेंट्स, ये सब। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये जो थोड़ी है स्मोकिंग वगैरह से जेसन, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये मुझे मिला, रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी। जो होता है कि एज के साथ आप सोचते हैं छोड़ो, तो वो थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है, उसमें फोकस भी करना पड़ेगा। ऑस्टियोपोरोसिस में स्पेशली स्पाइन, हिप एंड रिस्ट, ये 3 जगह बहुत कॉमन है जहाँ पे आपका ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए, और बैक में अक्सर पेन होने लगता है, ये सारे पोस्चर्स चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। इसीलिए योगा और एक्सरसाइज का रोल है कि आप अगर योगा करते रहें तो ये सारे पोस्चर्स आपके सही रहते हैं। कैल्शियम सप्लीमेंटेशन मेन आंसर है, 1.2 ग्राम कम से कम कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, एंड विटामिन डी सप्लीमेंट 1000 इंटरनेशनल पर डे, ये 2 चीज़ें सप्लीमेंटेशन के लिए हैं। अगर ज़्यादा पेशेंट को प्रॉब्लम है या वुमेन को प्रॉब्लम है, सच में बहुत सिम्टोमेटिक है, तो रोल आता है कि हम बिसफॉस्फोनेट देते हैं। ये भी मैंने अभी तक 10 पेशेंट से ज़्यादा नहीं यूज़ किया, 10 में ही यूज़ किया होगा, लेकिन जब भी लेना है तो 30 मिनट बिफोर मील लेना है, और फिर निलोरली 30 मिनट्स के लिए कम से कम उसे रहना है। पेशेंट शुड रिमेन अपराइट 30 मिनट के लिए, ये इसके साथ खास बात जुड़ी हुई है अगर लेना पड़े कभी तो। ये रेलॉक्सीफेन भी आपके यहाँ तो आपने डेवलप किया है, सहेली, छाया, सेंट्रोमैन और मिलॉक्सिफेन, वो हमारा यूज़ होता है कॉन्ट्रासेप्शन में। रेलॉक्सीफेन यहाँ पे एबनॉर्मल यूटाइन ब्लीडिंग में भी यूज़ होता है रेलॉक्सीफेन, और साथ में मेनोपॉज में भी यूज़ करते हैं इसको हम।
हार्मोन थेरेपी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया मैंने। सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस में एक अभी आया है रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन 134 अमाइनो एसिड फ्रेगमेंट ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन, ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है कि आप दे सकते हैं सीवियर केसेस में। अब हम आते हैं कि मेनोपॉज में कैंसर की स्टार्ट होती है, वो एज होती है जिसमें कि कैंसर ऑलरेडी, कैंसर की स्टार्टिंग एज ज़्यादातर वो उसी एज के साथ मैच करती है, बट एज सच मेनोपॉज कैंसर नहीं करता है। कैंसर जो होता है वो सेल्फ एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क, बट बिकॉज कैंसर रेट्स इंक्रीजेज विद द एज एंड कैंसर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ डेथ इन वुमेन। तो स्क्रीन करना जरूरी है, बट मेनोपॉज इसका कोई कोरिलेशन नहीं होता है। तो ब्रेस्ट कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, ओवेरियन कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, ये सब उसी के साथ कोइंसाइड करते हैं, तो हमें इनको स्क्रीन तो करना है, बट इसका मेनोपॉज से कोई खास फर्क नहीं है। डर्मेटोलॉजिकल चेंजेस बहुत होते हैं। मुझे याद है मेरी मम्मी हमेशा कहती थी मेरा चेहरा बदल गया ना, हम कहते नहीं मम्मी अभी बहुत सुंदर लग रही हैं, बट वो हमेशा एक ही चीज़ पूछती थी मेरा चेहरा चेंज हो गया। तो मुझे लगता है डर्मेटोलॉजिकल चेंजेस ज़्यादा हर्ट करते हैं बजाय और चेंजेस के, क्योंकि वो आपको सीधे दिखते हैं ना, जब मिरर आप देखते हो तो आपको रोज़ वो दिखता है कि अच्छा मेरे झुर्री पड़ गई, मेरा चेहरा चेंज हो गया, तो ये थोड़ा सा असर डालते हैं। स्किन एट्रोफी, रिड्यूस थिकनेस, रिड्यूस कोलेजन कंटेंट की वजह से सारा होता है, और सीबेसियस ग्लैंड डिक्रीज हो जाए तो थोड़ा ड्राइनेस चेहरे पे आ जाती है। लेकिन आप अगर अच्छे से क्रीम लगाते हैं तो कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता। हाँ, हाइपर पिगमेंटेशन एक ऐसी समस्या है जो सच में होती है, तो इसके लिए आप आजकल तो बहुत अच्छी क्रीम्स हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो अब इतना फेस पे फ़र्क नहीं पड़ता, पहले बहुत पड़ता था। अब तो आपकी ब्यूटिशियन आपको बहुत अच्छी चीज़ें बता देती है, उससे सारे चेहरे मेंटेन रहते हैं, कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता है। ये सबसे बड़ी समस्या है वेट गेन, जो आपके बॉडी में डिपॉजिट शुरू हो जाते हैं। विथ एजिंग वुमेन मेटाबोलाइज स्लो कैलोरी, रिक्वायरमेंट घट जाती, खाना हम शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम आराम से तब पैसे भी काफ़ी आ चुके होते हैं और हम अच्छे से लाइफ जी रहे होते हैं, लग्जूरियस लाइफ। तो हमारे खाने पीने की टेंडेंसी और हमारे रहने का अंदाज बदल जाता है, तो वो हमारे लिए बहुत दिक्कत तलब होता है कि हमारे फैट जो भी हम खाएंगे अगर हम उतना कर नहीं रहे हैं तो हमारे बॉडी में इकट्ठा होगा ना, जो भी एक्स्ट्रा हमने लिया उस वजह से थोड़ा हार्मोन्स का रोल है, जिससे आपका ये वेट गेन होता है। तो वेट रिडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए क्या है, वॉकिंग एंड एक्सरसाइज, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन इज द आंसर। साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, नर्वसनेस होने लगे, फटीग होने लगे, हेडेक हो रहा है, इंसोम्निया, डिप्रेशन, जिसमें इरिटेबिलिटी सबसे कॉमन है, गुस्सा बहुत आने लगता है समय के साथ, बट ये ऐसी चीज़ें सब समय के साथ समाप्त हो जाती हैं। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी किसको देना चाहिए, जिनमें मेनोपॉजल सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं या ऑस्टियोपोरोसिस, आपको बीएमडी कराया, आपको लग रहा है कि ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो रही है, तो उनमें आपको ज़रूरत हो जाती है कि आप दें, अदरवाइज ऐसा सच नहीं है। प्रीमेच्योर ओवेरियन फेल्योर में देना है, क्योंकि अभी लंबी लाइफ वुमेन को जीना है और ये 40 ईयर पे शुरू हो गया तो देना है। और सर्जिकल जो पेशेंट होते हैं वो सर्जिकल मेनोपॉज उनमें देना पड़ता है, क्योंकि नॉर्मल क्या होता है कि आपने अगर नॉर्मल महिला में शुरुआत तो हो जाती है 40 ईयर से घटना शुरू होता है एस्ट्रोजन का, लेकिन एक्चुअली ये 50 पे जाके थोड़ा सा सिम्टम्स पता चलते हैं, बट असली जो प्रॉब्लम है वो 65 के अराउंड आती है। ओवरी कुछ ना कुछ हार्मोन रिलीज करता रहता है 60-65 तक, प्रॉब्लम वहाँ होती है। इसलिए हम लोग हिस्टेक्टमी पहले कहते हैं, हिस्टेक्टमी कराते थे लोग कहते थे ओवरी भी निकाल दो। आप क्या रिसेंट कॉन्सेप्ट है कि हम लोग ओवरी बिल्कुल नहीं निकालते। क्यों? जब तक ओवरी है थोड़ी भी उसमें फॉलिकल्स हैं तब तक एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है, तो 65 तक ये हेल्प करते हैं बॉडी को। तो अब हम लोग 60 ईयर की कोई लेडी ऑपरेट करने जा रहे हैं, वो कहती है तो भले उसका निकाल दें हम ओवरी, लेकिन इसके पहले अब नहीं रिमूव करते। हाँ, जब तक कि ओवरी ही इट्स अ डिजीज ना हो। तो ये कॉन्सेप्ट में चेंज आया कि ओवरी रिमूवल अब हम लोग मना कर देते हैं। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का बहुत ज़्यादा अप्रोच बढ़ गया है कि इतनी जल्दी सर्जरी करनी नहीं है, क्योंकि आपने अगर यूट्रस भी निकाल दिया तो आपने 10 ईयर पहले उसका मेनोपॉज शुरू हो जाएगा। मान लीजिए किसी को यूट्रस आपने 40 पे निकाला, नॉर्मली उसका मेनोपॉज शुरू होता है कितना 52-55 में जाकर के, उसका जो है 10 ईयर पहले मेनोपॉज कर दिया। यूट्रस निकाल दिया आपने, मेंसेस स्टॉप हो गए, बट फिर भी ओवरी फंक्शन करते रहते हैं। तो ओवरी जैसे 65 तक मैंने कहा ना काम करती है, अगर आपने निकाल दिया यूट्रस तो वो ओवरी 55 में काम करना बंद कर देगी, मतलब ओवरी की क्वालिटी में चेंज आ गया। तो वो ओवरी के जो हार्मोन्स हैं वो हमारे जो 65 पे पूरी तरह कंप्लीट सेजेशन होता, वो 55 पे सेजेशन हो गया।
तो आप एक तो हिस्टेक्टमी अवॉइड करते हैं इसीलिए कि ना ही करें हिस्टेक्टमी, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट का रोल बढ़ गया कि जितने दिन यूट्रस रहेगा उतने ही ज़्यादा दिन ओवरी के फंक्शंस अच्छे रहेंगे। दूसरा, अगर यूट्रस निकालना भी पड़ा किसी कारण से तो ओवरी एटलीस्ट ना निकालें, ताकि एटलीस्ट 55-60 तक उसकी लाइफ जो है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक होता है ना लाइफ जिंदा रहना, एक होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी तभी बेटर होगी जब ओवरी या तो होंगे या फिर आप बाहर से हार्मोन देंगे। बाहर से हार्मोन देने का डर ये है कि 5 ईयर के बाद हो सकता है कोई मैलिग्नेंसी का सस्पिशन स्टार्ट हो जाए। तो हार्मोन देना इतना आसान नहीं है, इसलिए बेहतर है कि ओवरी को ही हम क्यों रिमूव कराएं, ओवरी जितने दिन हो सके वो बने रहें। ये बहुत सारे हार्मोन्स अवेलेबल हैं हमारे पास, इम्प्लांट्स, पैचेस, पिल्स, क्रीम्स, तो वैरायटी ऑफ हार्मोन्स हैं, किसी को भी हम यूज़ कर सकते हैं। बट यही है कि प्रॉब्लम ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, ये सारी प्रॉब्लम्स इनकी वजह से हार्मोन यूजुअली हम अवॉइड करते हैं। बट फिर भी अगर लाइफ इतनी डिस्टर्बिंग है तो फिर हम देते हैं, कोई ऐसा नहीं कि नहीं दे सकते। और कंबाइंड ओरल पिल्स भी यूज़ होती हैं हार्मोन्स को बैलेंस करने में। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस इन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन बेस्ट हैं जब तक इनसे काम चल जाए। बेसिक ट्रीटमेंट हमें इसमें फोकस करना है, फिर हमें अगर नहीं कंट्रोल हो रहा तो हार्मोन पे आना है। हार्मोन में ईस्ट्रोजन हार्मोन है, आप दे सकते हैं, लेकिन और मेड्रोक्सी जब भी हार्मोन देते हैं, मैंने कहा ना प्रोजेस्टेरॉन उसको काउंटर करने के लिए मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट आप हमेशा साथ में देते हैं। तो ये दोनों मिला के ही देना पड़ता है, अकेले नहीं देते। कब तक दे सकते हैं एचआरटी किसी को? अगर एचआरटी मान लो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देना ही पड़ा तो 5 ईयर। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमें वैसे भी कहते हैं अगर हार्मोन रिप्लेसमेंट में पेशेंट है तो आपको 6 मंथली उसका चेकअप करना पड़ेगा, उसकी लिपिड प्रोफाइल और टीवीएस करके एंडोमेट्रियल थिकनेस है, ट्रांसविजनल सोनोग्राफी से एंडोमेट्रियल थिकनेस हम लोग 6 मंथली इवेलुएट करते हैं कि थिकनेस में कोई चेंज तो नहीं आ रहा है। एंडोमेट्रियल कैंसर के इवेल्युएशन के लिए आपको ट्रांसविजनल सोनोग्राफी, ओवेरियन कैंसर के लिए ट्रांसविजनल सोनोग्राफी, तो वो आप अगर देते हैं तो फिर ये आपको इस पे फॉलोअप पे रहना चाहिए। अगर डॉक्टर कहता है आप 6 महीने पे सच में जांचें कराइए तो आप कराइए वो इन्वेस्टिगेशन, नहीं प्रॉब्लम हो सकती है। यूजुअली आप देते हैं हार्मोन तो सिम्टम्स लास्ट बिटवीन 2 to 5 ईयर, सो ट्राई स्टॉप 3 to 5 ईयर में बंद कर देना चाहिए। अगर बहुत फिर भी ज़रूरत है तो आपको कंटिन्यू कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन के साथ। अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 2 से 3 महीने आपको रिबाउंड चेंजेस आएंगे और आपको प्रॉब्लम उससे ज़्यादा भी हो सकती है 2-3 महीने, तब जाके बॉडी एक्लेमेटाइज होगी, फिर आपकी चीज़ें सब सही होंगी। तो फाइनली क्या है, हम क्या कहना चाह रहे हैं? मेनोपॉज फिजियोलॉजिकल फिनोमेना, दिस इज नॉर्मल फॉर द एवरी वुमेन। चेंजेस बॉडी में हो रहे हैं, उन चेंजेस को हमें एक्सेप्ट करना है, उसके साथ साथ हमें अपने आप को चेंज करना है। मीन्स हमें अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करनी है, हमें अपने एक्सरसाइज, योगा एंड डाइट में चेंज, एक्सरसाइज योगा शुरू करना है, जो यंग एज में यूजुअली नहीं करते, क्योंकि गेम यंग एज में क्या आप इतने गेम खेलते हो कि उस वजह से आपको पता ही नहीं चलता। आउटडोर गेम्स जितने हैं उस, या आप दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, काम इतने करते हैं तो आपको समझ में नहीं आता। बट एज के साथ साथ आपको टाइम बाउंड योगा एंड एक्सरसाइज पे फोकस करना होता है। साथ में अगर ये चेंजेस हो रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि कुछ दिन में अपने आप बॉडी इसमें एक्लेमेटाइज हो जाएगी और आपको ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। लेकिन थोड़े समय के लिए आपको आइसोफ्लेवॉन सप्लीमेंट कर सकते हैं, सबसे सिंपल, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सोया की जो प्रोडक्ट्स हैं वो बढ़ा सकते हैं खाने में। कैल्शियम बेहद सबसे इंपॉर्टेंट, कैल्शियम, विटामिन D3, इन साथ में सोया प्रोडक्ट, इस पे फोकस करना है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ। तो इतने अगर आप चेंजेस अपनी बॉडी में, अपने लाइफ स्टाइल, अपने उसमें चेंजेस लाते हैं तो मेरे ख्याल से ज़रूरी नहीं कि मेनोपॉजल सिम्टम्स आपको ऐसे हों कि उसकी वजह से आपको घर बैठना पड़े या फील्ड में आपको सुनना पड़े कि आप काम नहीं कर पाते, आपको बहुत गुस्सा आता है, आपको जो जॉब दिया जाता है आप पूरी तरह परफेक्शन के साथ नहीं करते। आपकी बॉडी एक्लेमेटाइज रहेगी और आप अपना काम प्रॉपरली कर लेंगे। तो जो था ना कि ब्रेक द साइलेंस, हम क्यों सुनते हैं? क्योंकि हम वो करना नहीं चाहते। अगर हम वो चीज़ें अपने आप को मॉडिफाई करें, अपने अंदर ये सारी चीज़ें ऑप्ट कर लें, तो शायद हमें कहना ही नहीं पड़ेगा कि हमको ये प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम होती तो मुंह से निकल ही जाता है ना कि हमको ये प्रॉब्लम हो रही है, हमें प्रॉब्लम होएगी नहीं तो हम क्यों निकलेगा। तो हमें ये मॉडिफाई अपने अंदर करना है कि, और इसीलिए मेरे ख्याल से इस समय जितना भी फोकस हो रहा है सारा योगा एक्सरसाइज पे बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है, और ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये नहीं कहते हैं कि लोग पहले कहते हैं कि नहीं ये तो संत महात्मा की चीज़ है, नहीं भाई ये तो सबकी चीज़ है।
सभी को ये करना पड़ेगा। अगर सच में हमें अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रखनी है तो हमें ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। इसके बिना हमारी क्वालिटी नहीं सुधर सकती। हम लाइफ तो जी सकते हैं 80 साल तक, बट हमारी क्वालिटी जो है जिसमें हम बहुत काम कर सकें और कहीं प्रॉब्लम ना आए। और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी अगर आपकी कोई डॉक्टर स्टार्ट करता है तो सावधान रहिए कि 6 मंथली एटलीस्ट उसका चेकअप कराते रहिए। ले आप 5 ईयर तक सकते हैं, 5 से बियॉन्ड भी जा सकते हैं, बट ये कि आपको सावधान रहना है। थैंक यू। क्वेश्चंस लास्ट में लेंगे ना? ओके। Okay. Thank you, ma'am. This was a very comprehensive presentation, and आपने सारे spheres को touch किया. And please reserve your questions. We'll have a combined question-answer session for both the clinicians. Now we move on to the next speaker, that is Professor Susheel Gupta. He is professor at Department of Endocrinology at SGPGI. His research interests are osteoporosis, metabolic bone diseases, endemic fluorosis, and renal stone disease. He's an executive member of Endocrine Society of India, and he has chaired and has been part of many DBT apex committees, for example, DBT Bioscientist Award Committee. He has co-authored many books and chapters, and he has done very seminal work in the field of osteoporosis and endocrine disorders. And over to Dr. Gupta. Good evening, friends. Thanks, Dr. Monica. Thanks, Dr. Neeti, for inviting me to share my thought on andropause. And hats off to Dr. Sachan for giving such a wonderful oration on menopause. Of course, I can't match her oratory. That was simply fantastic. Well, female first is always a part of society. So Dr. Rekha Sachan took the initiative to speak on menopause, and in fact menopause happens a little earlier in women as compared to andropause. So here the man still lagged behind a little bit here. Andropause is similar to menopause, but a little different in some sense actually. Again, as Dr. Rekha Sachan said, menopause means cessation of periods. Here it is loss of male hormones, that is testosterone. And we know that these sex hormones are important for general well-being, be it sexual functions as well as non-sexual functions, for maintaining the body vitality. In whole sense of physiology, be it muscle, be it heart, be it brain, be it every organ of the body, these sex hormones have got beneficial effects across the lifespan of a person. Like if we talk of estrogen, estrogens are cardioprotective. It is important for the bones. Similarly, testosterone is not that protective for heart, but it is protective for bone. And lot of male hormones act through female hormones. Again, gender first, ladies. It acts through estrogens actually. So when you lose testosterone, in general sense, I'm not talking of only old age, I'm talking of all the ages, that you lose the sexual functions, you lose your libido, you lose your sexual power, and this is important to be associated with low level of testosterone, that is andropause. So there are two components. One is decrease in sexual satisfaction, that's a sexual function of the hormone.
Second is decline in the feeling of general well-being. These androgens or testosterone is important for maintenance of muscle mass actually, for your performance, for your endurance. आप कितनी ताकत से काम कर सकते हो उसके लिए testosterone भी important है. So general sense of well-being is non-sexual function. Sexual function is sexual satisfaction and associated low testosterone. There could be many reasons for these two things and they can have a normal testosterone level. That's important. So this has got, these three things have to be combined together to say that it is andropause. Andropause is nothing but it's lowering of total testosterone or free testosterone along with some symptoms. This is important, along with symptoms is extremely important actually. Now, if you look at a temporal profile of how the hormones, male hormones behave across the lifespan, this is serum testosterone level and this is the age from birth till 100 years of age. When you get born, in males there is a mini puberty, there is sudden surge of male hormones which is important for development of sexual organs in the body, baby. Then there is a quiescent stage in the childhood, no male hormones are produced. When you enter puberty, it is peaking and then it gradually declines. So the peak hormones are achieved at the puberty and this peak levels of hormones are important for the development of the boy in the terms of sexual functions, in the terms of bones, to have the maximum bone in their, maximum mineral in their bones, and to have the maximal amount of muscle mass also. So there are multiple components these hormones for that matter. And thereafter at the age of 30 years, gradually testosterone goes low, it reduces gradually. It is to the tune of 1% per year. Now, if you look at what really happens to the testosterone level after the age of 30 years, there are many studies which spans about 10 to 15 years, and these are the number of studies, these black lines are number of studies, and these are the number of subjects actually. 177 subjects in this study, 144 male persons in this study, 151 in this study, 158 and so forth. And as you know, there is a progressive decline of the testosterone levels in all the age groups. And if you look at the lowest levels are there in the elderly age group. So when we go low below 325 or 300 nanomoles per ml, then we say that they are low testosterone, and that bothers us. That bothers us in multiple things. Andropause is not a sudden event like menopause happened. Andropause is a gradual event. It happens over the years, but manifest because menopause have got sudden cessation, so they have got hot flushes. Hot flushes are not that common in males because there is a gradual reduction in the male hormones actually. Now, how common it is in the aging man? Andropause is a part of aging actually, but it is important to emphasize that if you look at a percentage of people having low testosterone and low free testosterone, low testosterone, we know that we measure the total testosterone in blood, and as we grow older, the percentage, these black bars, you can see the rise in the percentage of people having low testosterone, that is less than 325 nanogram per deciliter or 11.3 nanomoles per liter. So as it increases at the age of 70 to 80 years of age, it is around 25%, is a large number. Menopause affects all the women after the age of 45 or 50 years, but andropause affect 1/3 of population between the age of 70 to 80 years. That's important to emphasize. But at the same time, when we look at a free testosterone index, which is a ratio of total testosterone with the sex hormone binding globulin, which is a binding protein which binds to the testosterone. And here we calculate the free testosterone index, and we look at a free testosterone which is a bioavailable testosterone for the tissue. It goes almost
more than 80%. This is the number of subjects actually 94, but the deficiency is there in almost more than 80% actually. So, as we grow older, we have androgen deficiency or testosterone deficiency or late onset hypogonadism of adults or many more other terminologies we are using this. So, but this is to be emphasized that as we grow older, a big chunk of males do have deficiency of testosterone hormone. Now, when we define it, hypogonadism aging man is defined by low free testosterone, and it is because of decreased testosterone production. There are multiple reasons for that, why the production from the testis is reduced for testosterone. And increased sex hormone binding globulin, because more testosterone binds to sex hormone binding globulin, therefore you have got lower amount of free testosterone or bioavailable testosterone to the tissue actually. Testosterone declines with the aging at the rate of 1% per year, but at the same time this rate of decline is influenced by many more factors like obesity, illness, severe emotional stress, certain medications. The most important point is it is decelerated by the management of health and lifestyle factor, especially obesity. Almost 30% of men in 60s and more than 80% of men over the age of 80 years have got free low testosterone index, means they do have hypogonadism. Now, how does it concern us? What are the symptoms of andropause? They are very, very non-specific. They could be decreased libido, erectile dysfunction, infertility. These are the sexual functions actually. But when you look at the non-sexual functions, increased irritability, decreased ability to concentrate, they can have a depression, they can have a sarcopenia or decreased muscle mass and strength actually, which leads to the frailty. When they walk, when they trip, they fall easily actually because of poor muscle strength and poor muscle mass. They have reduced stamina, they suffer from osteoporosis, and they can have occasionally vasomotor stability. These are the findings that some people say that I am not growing my beard as fast as I used to. They can have a decreased amount of axillary pubic hairs. The testes may be softer and smaller. They can have gynecomastia, or when we call it, they are developing the breast in the males actually, but we call it gynecomastia. So, the point arises is what level of serum testosterone we can have an andropause. Actually, it differs from person to person. There is a huge amount of variability from subject to subjects. It has been seen that lot of these people are asymptomatic. They shall just present the depression, irritability, or they may not have any symptoms when they are undergoing evaluation of some other disease, and when you measure testosterone, it is found to be low. Then you go back and retake the history, then you realize they do have these kind of symptoms actually. Now we are aging. Andropause is a part of aging actually, but the aging is not isolated for androgens. The other organs are also undergoing aging, and you have got obesity, osteopenia, corneal decline, erectile failure. This can be related to aging also. So these can happen with even with the normal testosterone. So this is further compounded by age dependent decline in the body functions and mental functions. There are no specific symptoms of andropause, that is important. Menopause, we do have hot flashes of very, very specific symptoms, but andropause does not have any specific symptoms. If the symptom is there, then we suspect andropause. No, it is a constellation of symptoms when we look for actually. If the symptoms, multiple symptoms are present, then we should suspect hypogonadism. But at the same time, this is an age when you have other comorbidities, other illness also, like depression, hypothyroidism, alcoholism, use of medications, and lot of medication which affects the testosterone synthesis and its action, which can further compound these issues actually. Why andropause happens? Is a part of aging process? Yes, but at the same time, there is a reduction in the number and function of Leydig cells actually. These Leydig cells are responsible for producing testosterone in the testes under the influence of hormones like gonadotropins, LH and FSH. So, Leydig functions
they function less, so they produce less testosterone. At the same time, there is a reduced production of gonadotropins from pituitary actually. So, and testosterone acts under the influence of these gonadotropins. So, we have got low testosterone because of that. Now, when we are looking at a screening, when you are looking at a large number of population, we always devise a questionnaire actually. We ask 8 or 10 questions from a person and whether do you have these symptoms or not. And there are multiple questionnaires devised. One of these are aging deficiency in aging males, Adam questionnaire, and Massachusetts male aging study questionnaire. And this is Adam's questionnaire and aging male, and this has got 10 questions actually. Do you have any decrease in libido or sex drive? Do you have any lack of energy? Do you have any decrease in the strength and endurance? Have you lost height? Have you noticed a decreased enjoyment of life? Are you sad or grumpy? Are your erections are less strong? During sex, has it been more difficult to maintain your erection to completion for intercourse? Are you falling asleep after dinner? Has there been a recent deterioration in your work performance? So, these are the 10 questions actually. Not all the 10 answers should be positive. If you have got positive answer yes to question number 1 and question number 7, you should suspect andropause in this kind of scenario. Or if you have got rest of any 3 questions positive, that is the non-sexual functions of the testosterone, then you should investigate for hypogonadism. But there is a catch here. It is not a perfect questionnaire. The sensitivity of this questionnaire is only 30 to 40%. Means that people maintain their sexual functions even with a low testosterone. Why they can maintain? We don't know the answers from endocrine viewpoint, but they can maintain actually. But it is important for a mass screening in the community actually that one should go through the questionnaire. If you have got a yes answer to question number 1 and 7, or if you yes answers to rest of the questions, 3 questions, then you should go for serum testosterone level measurements actually. Now, andropause is very, very important. Why it really concerns us? You must have seen that a lot of people gain weight as they grow older actually. It is not isolated because it is not because of their obesity they are developed. Obesity itself reduces testosterone level, but deficiency of testosterone also increases the weight actually. It is two-way pathway actually. So, andropause concerns us because of poor sexual functions, a important drive for the family functioning, higher BMI, that is body mass index, you grow overweight, you develop a paunch during these years after 40-50 years, you got high waist circumference, you have got deterioration in the bone mineral density, you develop osteoporosis, you have got lower hemoglobin. Hemoglobin is strongly under influence of testosterone. It's because it drives the blood cells to make more hemoglobin actually. You have got lipid abnormalities like lower LDL, HDL cholesterol and high triglycerides. You have got higher cystic blood pressure. Here it is important, you develop insulin resistance actually. You develop obesity, that is the reason you are resistant to insulin. You have got more chances of diabetes, metabolic syndrome and cardiovascular disease. 50% of Lucknow population, we did a survey in one of the middle class community actually, in the woman more than 50 years of age and in the man more than 60 years of age, almost 50% of this population is having diabetes actually. So, this is a paradigm shift in the thinking that diabetes is not that common. 50% is a huge number, and most importantly 50% of these people do not know that they have got diabetes. That is equally important, and this happens because of, to certain extent, because of andropause actually. Sarcopenia is a major issue which is coming up, poor muscle strength, muscle mass and muscle performance actually, 3 components. So, muscle mass is reduced, their performance is reduced and their strength is reduced actually. So, sarcopenia is a major predictor of mortality in the elderly age group, major predictor of fractures in this, and fracture is many times homicidal actually.
Poor physical activity, gait speed and physical functioning they have got, and poor quality of life. In today's date, we measure any disease process with the quality of life. How good is the quality of life? That is the most important, rather than biochemical parameters, anthropometric parameters we are looking at it. This is most important factor in us actually. How common in India actually? We thought that andropause is a thing of Western countries actually. It's not true. In a Pune study, it's almost 21%. It's a huge number, means 1/5 of the population, male population after the age of 60 years, they do have low testosterone. We carried out a survey of around 240 males aged more than 60 years, it's almost 30%. It's a huge number. And this is driving into the main issues is more diabetes, more osteoporosis, more frailty, more metabolic syndrome and all these things. Of course, we could never take the sexual history actually because it was very difficult to take in the community actually. So, how we diagnose andropause? The presence of 3 sexual symptoms, decreased libido, morning erection, erectile dysfunction, along with serum total testosterone less than 11 nanomoles per liter, or free testosterone levels less than 220 picomoles per liter. So, this is how we define andropause. So, these are the some symptoms, some biochemistry, both combined together that defines andropause. When we define severe deficiency, that is less than 8 nanomoles per liter. Why it is important 8 is that it is associated with a lot of metabolic abnormalities like insulin resistance and poor physical functioning. Now, andropause, these symptoms are influenced, the testosterone levels are influenced by many other medical factors like alcohol abuse, glucocorticoids treatment, chronic liver disease or renal disease, HIV infections, obesity, type 2 diabetes, hypertension, low vitamin D, HIV, and stage renal disease. All of these diseases influence testosterone level. So, this is extremely important, and this is the age when we do have these kind of illnesses actually. Now, a few words about obesity. Now, if I put obesity in Indian perspective, in today's date, almost 20% of school children in Lucknow in public schools are obese. Almost 30 to 40% of middle class group in the age of 40 years and more than that, they are obese actually. And almost 50% of obese people do have low free testosterone. That is important thing. Obesity is driving out whatsoever we have done the last 7 or 8 decades, what the medical advances has done to us in increasing the lifespan of a person last 7 to 8 decades, we are losing that benefit because of arrival of obesity actually. Obesity is a major killer, not directly but definitely indirectly. In my clinical practice, now in SGPGI, I have got more diet consultation to reduce the weight, almost 90-95%, and only 1% to increase the weight actually. Almost more than 60% of people are obese. If they are not obese by body mass index, they do have increased waist-to-hip ratio, that is visceral adiposity. So, we are driving hard against obesity, and that is a major culprit we are going to have now. Almost 50% of all obese men present have testosterone level less than 300 nanograms per ml, and there is an inverse linear correlation because of the scientific community. So, I make this statement, inverse linear correlation between total testosterone and BMI, and similarly with the visceral fat mass. The important thing is testosterone rises when you reduce your weight actually. So, this is reversible factor. Type 2 diabetes and testosterone, there are few studies to tell us that they are associated with low testosterone, and diabetes per se has got all these kind of sarcopenia, frailty and all these things, and increased fracture risk, it is associated with this. So, you have got a compendium of multiple risk factor to reduce the lifespan of a person. So, when to suspect andropause? This is for us to go through the questionnaire or at least ask yourself these questions actually. If you got this sexual dysfunction, erectile dysfunction,
reduce spontaneous erections, reduce sexual desire, that is libido, delayed ejaculation and reduce semen volume. So, this is, if any of these things are happening, non-sexual functions may inability to perform strenuous activity, increased BMI, cognition deficit, if you are not able to concentrate in your work, fatigue, spatial memory, excess irritability, change in body composition, irritable mood, memory deficit, reduced BMD, hot flushes, mild anemia, disturbed sleep. So, one should suspect andropause. Any of these factors can be associated with the low testosterone actually. This is examination finding for us to clinician. You have got a man boobs, or we call gynecomastia. In general terms, we call man boobs actually. There is alteration in the testosterone consistency, small prostate size, gynecomastia, scant pubic and axillary hairs. Diagnosis is fairly easy. You look at the symptoms, you go for a measurement of serum testosterone. Ideally, it should be measured in the fasting state from 7 to 11 a.m. because testosterone has got a diurnal variation. It is highest in the morning, lowest in the evening. It's constantly affected by the food. So, it is taken in the fasting state before 11 a.m. So, one can measure serum sex hormone binding globulin or free testosterone. So, these are the conditions when free testosterone should be measured actually, which is not commonly available. Now, what is the treatment for that? Androgen replacement therapy, very simple. As Dr. Sachan said, we do not require hormone replacement therapy too often, but we require testosterone replacement therapy pretty oftenly actually. Depends on, it is not only for sexual functions, for many other reasons we also prescribe that actually. Testosterone replacement therapy has got a long history, and in fact, if you look at Romans, Egyptians considered testosterone as a foundation of youth actually, and early studies used injections of testosterone extract from animal actually, and they said this is hormone to maintain the youthfulness actually. We got a lot of drugs. We initially had alpha 17 alpha methyl testosterone oral, but they had a lot of hepatotoxicity, liver toxicity. Now we have got testosterone in the various forms, which is injectable. So, we have got injectable preparation, testosterone enanthate, thipionate, undeconate, and testosterone pellets. We have got non-injectables like patch, gel, nasal, or buccal. The question is, should all be treated if you are more than 65 and low testosterone? Answer is big no. Actually, every treatment has got some advantages, but it has got disadvantages also. You need to monitor these people. You need to know why you are treating that. You need to know how to monitor, in whom it should not be started, in whom when to stop it actually. So, long discussion is required to start testosterone replacement therapy in an individual, considering the benefit risk ratio actually. I here conclude that andropause is not uncommon. It is for us to look within our family. If somebody is really frail, aging, has got osteoporosis, has got marked obesity, has got sexual dysfunction, one should go for hormone level assessment, take appropriate measures, make a diagnosis, identify symptoms, investigate, and effective treatment is available. Thank you very much for patient hearing. Thank you. Now I invite both the speakers to come on the stage, and our director in action, Dr. Nivedya Chattopadhyay, please come on the stage, and the audience can raise their questions to both the speakers. So I think Niti can take questions. There are questions from online viewers as well. Sure. With us.
Good evening to sir and ma'am. There are some few questions that's come online. So the first question is, how can a female know about that she gone through the menopause after a hysterectomy? That after the uterus removal there is a no bleeding. So how she will identify or know that she's gone through the menopause period? Hello. Actually, it is dead sure after removal of uterus, still the ovary inside. Ovary is working properly, but definitely they will lose their function at least 10 years before. So if ovary is inside, that means there is no menopause, despite of removal of uterus. But there is waning of functions slowly. And then there is fall in the hormone, and then appearance of vasomotor symptoms. But how many years after the hysterectomy, it is very debatable. But at least 10 years, it takes 10 years, minimum 10 years. Ma'am, this is a very common that a common lady that's know that I have no bleeding from one means I am on the menopause. If she has already a removal of uterus, so how she will know about her body that I am for menopause? That's why I have some menopause symptoms like hot flashes, back pain, and another depressive and mood swings. एक्चुअली हम लोग जो ओपिनियन पेशेंट को जो बताते हैं वो ये है कि हम उसे बताते हैं कि आपकी ओवरी अंदर है, इसलिए आपको हार्मोन्स की चेंजेस इतने ज़्यादा नहीं होंगे. अगर आपकी ओवरी रिमूव करते हैं तो आपको हार्मोन में चेंजेस डेफिनेटली होंगे. अगर हम ओवरी अंदर हैं आपकी, तो आपकी ओवरियन फंक्शंस काम कर रहे हैं, तो आपको हार्मोन इम्बैलेंस नहीं होगा. बट फिर भी आपको अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करना है, क्योंकि यूट्रस निकल गया तो डेफिनेटली ओवरी के वो फंक्शंस नहीं होंगे, क्योंकि दोनों तरफ से ब्लड सप्लाई होती है ना, तो थोड़ी इधर की ब्लड सप्लाई यूट्रस तरफ की कट होगी तो उससे थोड़े फंक्शंस में चेंज आएगा. बट एक कॉमन लेमैन लेडी के लिए हम बोलते हैं कि आपको जब लगे कि आपको घबराहट होने लगी, आपको गुस्सा बहुत आने लगे, तो इसका मतलब ये उसके लक्षण हैं. और आपको थोड़ा सा ये लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करने के साथ साथ सोया प्रोडक्ट्स आप स्टार्ट कर दीजिए लेना, तो आपको जो चेंजेस हैं वो बहुत लेट पता चलेंगे. लेकिन चेंजेस डेफिनेटली 10 साल के बाद उससे डेफिनेट चेंजेस पता चलने लगते हैं, ओवरी होने के बावजूद भी. Thank you. There is another question for sir. Any effect of steroids on andropause? Actually, glucocorticoids reduce testosterone. Corticosteroids reduce testosterone by multiple pathways actually. So it reduces practically it induces the hypogonadism by multiple mechanisms. So whenever you are on glucocorticoids, one normally measures serum testosterone in males actually. Anyone else? Audience? From here, online questions are done? Okay. There are a few more questions. That's what I was saying. From the audience, of course, Seema was taking the online questions. So, anyone is having any questions? So if I may ask to both the clinicians, like during pandemic time, there was a reckless use of steroids to patients. I don't know, maybe in coming few years we would come. So do you think that the reckless use of steroids would have or may have effect on estrogen and testosterone levels and may lead? What we used in COVID was short-term steroids in high doses. And this was a savior of life in majority of people, in the people who had a severe or moderate COVID pulmonary disease actually. Short-term glucocorticoids, they reduce the testosterone, but later on it recovers in majority of the people. It concerns that when you are taking superficial doses in the long-term period, then you have got these issues. COVID itself caused lot of endocrine disruptions actually, but normally they recover with time, actually within 6 months time. Okay. So we are not left with residual disease because of glucocorticoids. Okay. Okay, thank you.
एक्चुअली शॉर्ट कोर्स इतना इफेक्ट नहीं करता बॉडी को, लेकिन अगर यही हम लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट कोई देते हैं स्टेरॉयड का तो बॉडी पे बहुत हेल्थ पे असर पड़ता है. तो स्टेरॉयड जो कोविड में दिया गया मैक्सिमम कितना 7 डेज 10 डेज, एक्चुअली तो 3 to 5 डेज ही मैक्सिमम हम लोग देते थे, फिर भी कभी कभी 7 डेज 10 डेज तक देना पड़ा. इससे ज़्यादा तो किसी को दिया नहीं गया क्योंकि उसके अपने साइड इफ़ेक्ट थे. ठीक है, इन्फेक्शन, पेशेंट को इन्फेक्शन हो रहा था, फिर म्यूकोर आने लगा, तो स्टेरॉयड वैसे ही कम दिया गया है. बदनाम ज़्यादा हुआ है स्टेरॉयड, दिया कम गया गया एक्चुअली में. ठीक है, बट बॉडी की इम्यूनिटी इटसेल्फ इतनी पुअर और पेशेंट एक कमरे में बंद हो गया. आइसोलेशन सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था वो आइसोलेशन. मुझे लगता है सारी समस्या की जड़ आइसोलेशन थी, जो कि कहा गया कि नहीं स्टेरॉयड डॉक्टरों ने ज़्यादा दिया इसलिए ज़्यादा समस्याएं हुई. तो आइसोलेशन में जब पर्सन है तो उसकी सारी हाइजीन, उसकी सारी बॉडी की एक्टिविटी सब चीज़ चेंज हो गई. तो असर असली उसका पड़ा. इवन जिनके फैमिली में देखो ना सबको हो गया, वो सारे ठीक हो गए एक साथ, उनमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुए क्योंकि सभी इफेक्टेड थे, सब अपना एक घर में सब लोग एक साथ थे. तो जहाँ हमने आइसोलेशन जो किया है वो थोड़ा ज़्यादा मुझे लगता है स्टेरॉयड की तुलना में डैमेज जो किया है उसने. There is a question back. Hello, ma'am. Hello, sir. So I have. So my question is regarding the arthritis. Many young girls and young females and the late age women are suffering from the arthritis. So doctors are recommending them the steroids also for the as a medication. So how it will affect the age of like menopause or the regular menstrual cycle? How it will affect it? Like it gives the severe impact on their cycles, or what are the consequences of that? जब भी आप स्टेरॉयड देते हैं और लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं तो स्टेरॉयड इफेक्ट तो बॉडी में डालता ही है, लेकिन वो मेनोपॉज में कितना इफेक्ट डालेगा ये डिपेंड करता है कि डोज क्या है. अगर लो डोज में यूज़ हो रहा है तो इतना इफेक्ट बॉडी में नहीं पड़ेगा, बट अगर ये हाई डोज में यूज़ करना पड़ रहा है किसी भी कारण से तो ये इफेक्ट करेगा बॉडी को. क्योंकि जहाँ पे एडिपोसिटी होगी नेचुरली बात है हार्मोन में चेंजेस शुरू हो जाएंगे, तो वहाँ पर. और स्टेरॉयड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, ये एडिपोसिटी क्रिएट करना. जब भी आप हाई डोज में देते हो इसका दूसरा ड्रॉबैक इन्फेक्शन, ऑस्टियोपोरोसिस, इसके अलावा जो तीसरा ड्रॉबैक है वो ये है. तो मेनोपॉज पे भी फर्क पड़ेगा, बट कितना पड़ेगा ये डिपेंड करता है कितना ड्यूरेशन आपने दिए, उस कितना लॉन्ग ड्यूरेशन ट्रीटमेंट हुआ और कितनी डोज आपने दी. अगर लो डोज में तो ऐसा इतना फर्क नहीं पड़ेगा, और शॉर्ट ड्यूरेशन तो बहुत नाम मात्र फर्क. मेरे ख्याल से ऐसा कहीं रिकमेंडेड नहीं है कि शॉर्ट कोर्स आपने स्टेरॉयड दिया और उससे कोई मेनोपॉज पे कोई फ़र्क पड़ा, क्योंकि मेनोपॉज इटसेल्फ 50 ईयर के बाद शुरू होने वाली प्रॉब्लम है. तो ऐसा सच उसमें इफेक्ट कहीं नहीं है, मेंशन नहीं है. Anyone else? हेलो डॉक्टर साहब नमस्कार. जैसा कि बताया आपने कि मेनोपॉज जो है 45 से 55 के बीच में होता है और एंड्रोपॉज 60 and 65 के आसपास आता है, मैं जो समझ पाया हूँ. तो क्या एक सोशल अगर उसमें रेफरेंस में देखा जाए लड़के की और लड़की की शादी की एज का क्या डिफरेंस होना चाहिए, उसका कोई ताल्लुक है इससे, एज में डिफरेंस का? ये तो बहुत सदियों से चला आ रहा है कि यूजुअली हम लोग क्या गर्ल्स की एज तो बहुत ध्यान से देखते हैं और बॉयज़ की एज तो बहुत ध्यान से नहीं देखते हैं. शायद मेरे ख्याल से यही रीज़न होगा क्योंकि एंड्रोपॉज लेट है और एंड्रोपॉज इतना सिग्निफिकेंट भी नहीं है. मेनोपॉज तो 100% सिग्निफिकेंट है और टाइम बाउंड है. तो मेरे ख्याल से इसीलिए एज डिफरेंस में कभी इतना बॉदर नहीं किया माँ बाप ने भी कि भाई कितने लड़के की एज क्या है लड़की की एज क्या है. डिफरेंस कम है तो इसका बैड इफेक्ट आएगा? नहीं, ज़्यादा वो बेनिफिशियल रहेगा, बैड इफेक्ट क्यों आएगा. अगर मान लीजिए शादी में 2 साल 3 साल की एज गैपिंग तो ज़्यादा ही फ़ायदा है. जितने लेट आपका एंड्रोपॉज तो बहुत लेट प्रॉब्लम है ना. तो मेल की सेक्स टाइप तो लॉन्ग टाइम है, बट ये है कि फीमेल में चेंजेस तो आते हैं. बट अगर ये लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन और अगर आपको ज़रूरत है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी आप लेते हैं तो मेरे ख्याल से एज सच सेक्स टाइप पे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता. तो ये कहना कि मैरिज की एज क्या होनी चाहिए तो बहुत मैटर नहीं करता है. लेकिन हाँ, अगर एज बहुत
एज गैप होता है तो प्रॉब्लम तो आएंगी. Right. Thank you. देखिए दो चीज़ है कि मैरिज इज सोशल इवेंट एक्चुअली. If I ask all the girls here, how many of them would like to marry a man? How many girls would like to marry a man of younger than their age? You tell me the answer. एक भी हाथ Because नहीं it उठेंगे. is more of a financial and emotional stability and all these things which matters in the terms of marriage. That's a common social thing we think of. Yeah. All the girls are going to marry a person little not younger definitely, but little same age or elder to them by 1 or 2 or 3 years actually. It has got no relevance with the menopause. But if you look at a scientific context actually, there is not much of a relevance to the age of menopause and andropause. Andropause can happen even after the age of 40 years. Menopause can happen even before the age of 40 years also. So it has got no relevance to the andropause or menopause. Then, no further questions. In fact, we are getting late. I just have a last question to both the speakers. As our title said, how to break the silence at workplace. What exactly happens, as Neeti also mentioned in the starting, it's most of the time both the topics are like hush-hush types. No one wants to speak about all these things. But particularly being in a scientific institute, I believe it's the responsibility of such an institute also to open up, to teach to the society. Of course, people are sitting here listening us online, they will move out, and I believe they will start speaking more about these topics. So the question here is how we can help our colleagues. They are at times going through some kind of mental trauma, whether it's andropause or menopause. So even it's not like ladies are helping the ladies, it's more of understanding each other. And what's your suggestion, even from the clinical point of view, that so that the overall atmosphere turned out to be, the ambience would be better at a workplace? If I put my clinical perspective, if any of your colleagues has got menopause before the age of 40 years, be warned actually, because you are arriving a stage much earlier than expected. So you expect a better course of action from medical viewpoint. If any of your colleagues have got lot of botheration because of hot flushes, majority of women have got hot flushes when they achieve menopause, but only 10 to 15% require treatment. It is important to identify that in some people hot flushes are really bothering, affecting their sleep and work performance, so they should seek a medical attention. That's number 2. Similarly, if I look at andropause also, there are a lot of people who are frail, they have got osteoporosis, they have got mood swings, they have got depression, lack of energy, they should be investigated for andropause. So one has to look from that perspective within your family members. See, we are doctors, we are seeing the people who are coming to us. But as a family person, as a community person, I would say, I would look around within my family, has anybody has got these issues, and they should seek a medical opinion, number 1. Number 2, all of these are normal aging process, but at the same time they hamper your functioning both socially as well as at the workplace. So you can improve their quality of life by proper attention. That's extremely important. Number 3, all of these diseases are associated with metabolic complications like diabetes, hypertension, coronary artery disease, and fractures, osteoporosis, which are preventable. That's the reason we say at the menopause, please get some investigation done for bone mineral density, mammography, pap smear, and it is across all the specialties, not confined to one specialty actually. So one should have a regular medical screening by certain investigation, but let me tell you, the current philosophy of giving the blood sample to all the reference lab does not catch everything. Clinical examination is extremely important to report, to interpret those results. In a day, I received at least 1 or 2 or 3 reports coming from some commercial labs. Sir, इस report में देख के बता दीजिए क्या गड़बड़ है.
But I tell you, this is only 20 to 30% of total clinical picture. Real picture comes when we examine the person कि आपको इस रिपोर्ट्स का मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप थायराइड की दवा ले रहे हो, TSH नॉर्मल है, ले रहे हो, सही ले रहे हो, गलत ले रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस रिपोर्ट देख के बता रहा हूँ कि इस तरीके से किसी की फोटो देखकर कहो कि ये लड़का अच्छा है कि लड़की अच्छी है. Unless you really know the background things actually. So getting the test done, get a medical examination done by a good clinician, good person, to any doctor you know of. You must get it done after the age of 35, 40 years. I think it is very, very mandatory. As Dr. Sachan said, that KGMC has implemented the annual medical examination. It is applicable to all the bureaucrats in across the country. It is a very, very relevant step. You catch the disease in early stage and implement the measures. So important to recognize that these are the normal events, but we should know where to intervene, where to seek the medical opinion. So, ma'am, एक्चुअली जो मैं समझी डॉक्टर मोनिका ने जो मुझे बताया, जो मेरे माइंड में है ये कि ये एक तरह से ना हम लोग इसको टैबू की तरह लेते हैं, स्पेशली फॉर फीमेल. मेल के लिए तो कोई बॉदर नहीं करता. मैंने पहले ही कहा कि ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो मेल को तो कुछ भी होगा तो वो सब चलता है, बट फीमेल के लिए स्पेशली हर चीज़ में क्वेश्चन मार्क. तो ये जो है ना, ब्रेक द साइलेंस एट वर्क प्लेस, हर जगह अरे आप कैसे कर सकते हैं, आप तो मेनोपॉज में पहुंच गए ना. तो ये समझना है कि जैसे एक प्रेगनेंसी फिजियोलॉजिकल स्टेट है, वैसे मेनोपॉज भी एक फिजियोलॉजिकल स्टेट है. एक दौर होता है जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, बच्चा पैदा होता है, फिर क्या हम काम नहीं करते, फिर हम एक्टिव हो जाते हैं, फिर हम रन करने लगते हैं और हायर पोस्ट अचीव करते हैं, फिर हम दौड़ भाग में लग जाते हैं. वैसे ही एक मेनोपॉज है, कुछ दिन का ट्रांजिशन फेज है, कुछ साल बाद फिर आप उसी रफ्तार से काम करेंगे. तो ये कहना कि अब मेनोपॉज हो गया, अब आप एजेड हो गए, आप बुढ़े हो गए, आप ये नहीं कर सकती, आप वो नहीं कर सकती, वी कैन डू एवरीथिंग, बट जस्ट वेट फॉर 1 and 2 years to acclimatize the body, and after that we can initiate your own work, whatever we want to achieve. उसमें कोई हर्डल नहीं है, कोई हिंड्रेंस नहीं है. और ये कहना कि मेनोपॉज की वजह से हम ये नहीं कर पा रहे हैं या आप नहीं कर सकती हैं, ये तो बिल्कुल एक वही है ना कि मिथ्स है. तो इसको तो निकाल देना है बॉडी से. I think Ritu has one question. I absolutely agree with her. एक्चुअली and in ओपीडी fact- में आप बैठो ना तो आपको पता चले. No, but he will agree with हाँ, सर ने Yeah. जो वो See, सर्वे किया ना, जनरल the- पब्लिक सर्वे. If you go community, if it's more than 60 years, it is almost 30% in Indian population. Between the age of 30 to almost 60 years is less than 2% or 1%. No, but you also recall that we have had a discussion that obese men don't come to clinics for either testosterone examination or anything. They would Normally we rather go don't to go gyms. for it. Normally we don't go for Yes, it. Very, yes. very specifically actually. And that is the reason that we don't have a lot of data around it. and there We is don't have any confusion of systematic the study regular actually. check I agree with you. We don't have any systematic study. It's a community study which we carried out, and almost 50% were obese. No, but that is also for men more than 60 years. 60 years. Yes, We it has to focused on be- that from yes. osteoporosis viewpoint actually. So that's the reason we never looked at it before that. ऐसे अगर हम देखें तो वेस्टर्न कंट्री में मेनोपॉज की एज भी 55 के बाद है. ये इंडियन सिनेरियो में 51 हम कहते हैं, 52, 51, बट अगर वेस्टर्न सिनेरियो में तो 55 to 60 की एज उन्होंने उनके यहाँ है, क्योंकि लाइफ स्टाइल हर जगह अलग अलग है. and lifestyle तो I लाइफ believe स्टाइल is का the बहुत key. बड़ा रोल है. तो
ये कहना कि मेनोपॉज से बहुत सारे मतलब ये Eat हिंड्रेंस healthy. है, दैट इज रॉन्ग. Eat healthy, live healthy, and that's Yeah. the key to सबसे beat, important to remove defeat the with mental the stress. menopause or andropause. I believe that's the Yeah, this is the take-home finding. message from both the clinicians. Of course, if the therapy is required, it's a different thing. But we should be determined with ourselves, and of course, the way the topic has been taken by Niti. In fact, I appreciate and I thanks a lot to her to take such a topic publicly open. So I mean, we will be opening a dialogue with it. Actually, that is something very important, and I thank both the clinicians coming all the way here. In fact, Dr. Susheel was a bit skeptical before said I may manage online. I really thanks a lot, sir. You finally managed to come here. And Dr. Sachan, of course, I had been knowing her since more than 10 years, but it's real pleasure, ma'am, to see you here in the campus and listening both the speakers here. And of course, Dr. Nevedia, who facilitated this program and helped us to cross all the hassles. So now I invite Dr. Nevedia to give a memento of appreciation to Dr. Rekha Sachan. Dr. Nevedia, please give a token of appreciations to Dr. Susheel Gupta. And no event is complete without the audience, so a big special thanks to the audience also to be here and listening to both the speakers patiently. Any questions can be raised online. We'll take it up further. लास्ट में मैं एक बात कहना चाहूँगी कि सच में मुझे भी इतना एंड्रोपॉज का सही ढंग से नॉलेज नहीं थी. आई एम वर्किंग इन दिस फील्ड 25 years, 22 years for job, in 3 years for residency, but still andropause is lacking in my knowledge. It's तो a आज big बहुत अच्छा लगा eye-opener to andropause all भी of सुन us. करके, क्योंकि हम लोग तो गायनेकोलॉजिस्ट है, तो मेनोपॉज के आसपास होते हैं, बट एंड्रोपॉज सुनकर सच में बहुत अच्छा लगा मुझे. No, we look after these people actually when we do clinical practice. I invite all of you for a cup of tea outside, so questions can be taken there also. Thank you.